Among the exhibitions which opened in Delhi this week, the most noteworthy was a display of restored masterpieces of Raja Ravi Verma and Amrita Shergill. The exhibition, portraying some of the most valuable in the repertoire of modern Indian art, opened at the National Gallery of Modern Art. Particularly, it's welcome because, as you know, our country, abundance of antiquity. After all, these paintings are not so old when you think of the time lag of our heritage. Sculpture, caves, fresco painting, miniature, endless work. Another display of realism by young Delhi-based painter Rahul Arya opened this week at the capital's LTG gallery. In his oil on canvas works, Arya throws light and shade to achieve a striking effect. मेरे वर्क में लाइट एंड शेड का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है और कम कलर्स में ज़्यादा चीज़ दिखाने, डार्क टू लाइट चलता हूँ मैं जो भी पेंटिंग्स होती हैं। अब इस पेंटिंग्स जो है इसमें मैंने आप देखेंगे एक पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी पे लाइट किया है और पीछे भी बुक्स वगैरह काफ़ी हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है उसे लाइट में दिखाना वो भी बहुत ब्राइट है।